Good morning, students. Today we will start lesson 14 questions of grammar standard 7th. As you have learnt before, the following verbs are called auxiliaries. We have already learned about auxiliary verbs and you all know that the verb be, that is am, is, was, etc., have, do, can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought are all auxiliary verbs. They play an important part in the formation of quotients, negatives, quotient tags, etc. We use this all auxiliary verbs to form quotients or to add quotient tags. The auxiliaries can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought are called modals. These all auxiliary verbs are called modal auxiliaries or modals. The verbs need and dare sometimes behave like auxiliaries. Also, the verb need and dare also sometimes they are also used like auxiliaries or modals. There are two kinds of questions in English. In English language, there are totally two kinds of question. That is, first one is yes no questions. Yes no questions means which we answered only with the yes or no. For example, are you writing? Are you reading? Are you sleeping? Etc. Are you eating? These all questions we can answer only in yes no way. And next is WH questions, which begin with a question word. WH questions always begin with the question words like who, which, what, when, where, how, why, whom or whose. For example, what is he reading? What are you doing? How are you? When you have arrived. This such type of questions are WH questions. The questions starting with WH. Okay. Whereas yes no questions begin with an auxiliary. The subject comes after the auxiliary or the first auxiliary if there are two or more auxiliaries, and the subject of the question comes after the auxiliary, and if there are two auxiliaries then the first auxiliary subject comes after the first auxiliary. In questions, the verb be it behaves like an auxiliary verb. An ordinary verb like to, is, am, are, was, were, they all comes before the subject. I will give you example. It is raining. So the question will be, is it raining? So here is comes before the subject. They have left. Have they left? He can do it. Can he do it? She was busy. Was she busy? You will be meeting. Will you be meeting him today? In simple present tense we write like he. For example, he writes. And in simple past we say he wrote. And we use do, does and did with these questions. He acts on TV. So what we will, we have to form the question of this, then we will form like this. Does he act on TV? For example, the dog bite him. Did the dog bite him? Note. तो ये नोट करना है कि do, does, did है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को फॉलो करते हैं. जैसे कि वर्ब्स जैसे go, write and sing. हम does he acts in films नहीं बोल सकते. Did the dog bite नहीं बोल सकते. Did you return the pen? इस तरह से हम क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं. So now see, in WH questions also, WH questions में भी हम first auxiliary या नॉन ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो यूज़ करते हैं सब्जेक्ट से पहले. जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं. और सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? हम डू, डस और डिड का यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में WH क्वेश्चंस बनाते टाइम पे. See, these are the examples of WH questions. He has gone. In bracket it is given where. So we will form a question like this. Where has he gone? Next is she was late. In bracket it is given why. So we will form a question like why was she late? Next is the CD broke. In bracket it is given how.
So we will form a question like how did the CD break? Now see next. If the subject is who, which, what, whose. अगर सब्जेक्ट who, which, what और whose है या तो what, which, whose के साथ noun है तो the verb is put after the subject. तो जो verb है वो subject के बाद लिखना है, जैसे कि हम statement लिखते हैं वैसे. Somebody hurt Gopal. So who hurt Gopal? Something is worrying her. What is worrying her? This answer is right. Which answer is right? So these are the examples. Now see, here they are telling us to compare the first sentence with the next sentence. So sentence is Gopal hurt somebody and the question is who did Gopal hurt? In this question, who is the object? Here, who is the object? Now here is an example where what is the object. Now see here. Here what is the object? She said something. What did she say? Now compare also the following. Now these two questions we have to compare. First is who is laughing at Ramesh? मतलब रमेश पे कौन हंस रहा है? मतलब somebody is laughing at Ramesh. कोई रमेश पे हंस रहा है. Who is Ramesh laughing at? मतलब रमेश किस पे हंस रहा है? रमेश इज लाफिंग एट समबडी, वो किसी और पे हंस रहा है. तो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंसेस है. You must have noticed that the question on the right ends with a preposition. अब राइट साइड वाला प्रीपोजिशन पे एंड कर रहा है और प्रीपोजिशंस इन क्वेश्चंस बिगिनिंग who, what, which, were come at the end. और प्रीपोजिशंस है वो who, which, what, were वाले क्वेश्चंस में हमेशा एंड में आता है. अब ऐसे ही क्वेश्चंस के प्रीपोजिशंस जो एंड में हैं उसके और एग्जांपल्स भी हमको दिए गए हैं. Who were you talking to? What are you worrying about? Which hospital is he in? Where do you come from? So these are the examples of the questions which are ending with a preposition. Now see on page number 58. If whom is used instead of who की जगह पे अगर हम whom यूज कर रहे हैं तो जो preposition है वो क्वेश्चन वर्ड से पहले आता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल टू whom were you talking, यहाँ पे whom से पहले हमने preposition to यूज किया है. Note that whom is not used except in very formal English. फॉर्मल इंग्लिश में ही whom यूज होता है, फॉर्मल इंग्लिश के अलावा whom यूज नहीं होता है. अब यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसको हम रीड कर रहे हैं. Hasn't Robert arrived yet? Can't they help her? As in the example above. अब जो हमने नेगेटिव क्वेश्चंस रीड किए उसके हिसाब से अगर हम नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव क्वेश्चन बनते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, जैसे हैज़ प्लस नॉट हैज़न्ट, कैन प्लस नॉट कांट, तो वो क्वेश्चंस बन जाएंगे, नेगेटिव क्वेश्चंस बन जाएंगे. इन मोर फॉर्मल इंग्लिश नॉट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट. फॉर्मल इंग्लिश में नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, जैसे कि हैज़ रॉबर्ट नॉट अराइव्ड येट, और नॉर्मल इंग्लिश में हैज़न्ट रॉबर्ट अराइव्ड येट. वाई डिड दे नॉट ओपन द शॉप? दिस इज फॉर्मल इंग्लिश. नाउ सी, इंडियन स्पीकर्स ऑफन फेल टू आंसर नेगेटिव क्वेश्चंस करेक्टली इन इंग्लिश. इंडिया में हम इंग्लिश बोलते हैं, मतलब इंडियन स्पीकर्स होते हैं वो नेगेटिव क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से करेक्टली नहीं दे पाते हैं इंग्लिश में. हमको यस और नो है वो फैक्ट्स के हिसाब से यूज़ करना होता है, क्वेश्चन के हिसाब से यूज़ नहीं करना होता है. जैसे कि डिडंट अब्दुल गो टू ईरान, तो यस ही वेंट. अगर वो गया है तो हम यस बोलेंगे, अगर वो नहीं गया है तो हम नो बोलेंगे. अगर फैक्ट है गया है तो हाँ बोलेंगे. उस हिसाब से हमको यस और नो के आंसर देने हैं. नाउ यू हैव टू रिमेंबर, you have to use no when you agree with a negative question and you have to use yes when you disagree with a negative question. अगर हम नेगेटिव क्वेश्चन को एग्री करते हैं तो हमको नो यूज़ करना है, और अगर नेगेटिव क्वेश्चन को डिसएग्री करते हैं तो हमको यस यूज़ करना है. अब हम देखेंगे हाउ टू यूज़ क्वेश्चंस. द बेसिक यूज ऑफ क्वेश्चंस इज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन. जनरली हम क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं
जब हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो ही हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट, कितने बजे मूवी स्टार्ट होने वाली है, तो 6:30। हमको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं। बट वी कैन यूज क्वेश्चंस इन अदर वेज सच एज मेकिंग रिक्वेस्ट। हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं, और ये कब होता है, स्पेशली जब हम मॉडल्स यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज रिक्वेस्टिंग, विल यू लैंड मी योर पेन, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम अपनी पेन हमको दोगे। और दूसरा है मेकिंग सजेशंस, शैल वी टेक अ टैक्सी, अगर हम कुछ सजेशन दे रहे होते हैं तो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम टैक्सी ले सकते हैं, क्या हम शैल वी टेक अ ट्रेन। इस तरह से हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सजेशंस के लिए, और या तो हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए। We also use questions when we offer something. For example, can I help you? And we also use questions when we ask permission, like that, may I use the phone? We use negative questions. हम negative questions कब use करते हैं? First, to show surprise or disappointment. अगर हम surprise है या हम disappoint है, जैसे कि haven't you finished yet? अब तक तुम्हारा finish नहीं हुआ है खाना। Hasn't she come? इस तरह से हम सरप्राइज हो जाते हैं या डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तब ये क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट इज व्हेन वी थिंक वी नो समथिंग एंड जस्ट वांट समवन टू एग्री विथ अस। अगर हमको कुछ पता है और हम चाहते हैं कि सामने वाला हमसे एग्री करे, उसके लिए भी हम नेगेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि आरंट यू सुनील्स ब्रदर, हमको पता है कि वो सुनील का ब्रदर है, लेकिन वो सामने वाला एग्री हो, उसके लिए हम पूछते हैं। फिर उसका आंसर हम यस और नो में देंगे। नेगेटिव क्वेश्चंस के आंसर्स हम ज़्यादातर यस और नो में देते हैं।